अस्सलाम वालेकुम। हमारी और की पॉडकास्ट है वो बड़ी रॉ और अनसेंसर्ड होगी, जिसमें हमारे गेस्ट हैं जो कि मेरे बड़े ख़ास दोस्त हैं, कमर हसन जाफर जी। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह आज आनी तुम जरा। अल्लाह का शुक्र। यार, टॉपिक है सच तो मेरे पास कोई नहीं है, पर मेरे ये पास भी नहीं है कि वैसे। जब हम कोई भी बात करना स्टार्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ निकल ही आता है। तो हम अभी अपने मेजर मसले पे बात करते हैं, जो कि है हमारी पढ़ाई। वो वाला। हमारी पढ़ाई के अंदर जिस तरह तुम देख रहे हो कि वही बात कि हमने स्टार्ट जो है वो मजे में किया था, बट अब मजबूरी में करते हैं। तो ये कैसे हो गया, कुछ बताओ। वैसे तो ये हर स्टूडेंट को पता है, ये सबकी जर्नी है। आप भले से इंजीनियर हो या फिर आप कुछ भी हो, डॉक्टर हो या फिर एक्टिंग या फिर जो भी आपकी फील्ड, ये फैक्ट है भाई। स्टार्टिंग में आप आते हो, आप भी समझते हो कि यार मैं इंजीनियर बनूंगा, आते के साथ ही मुझे मतलब बिल्कुल ही एक मतलब मेरा लेवल हो जाएगा। लेकिन यार बाद में फिर आपके जब लगना शुरू होते हैं, फिर वो लगते ही जाते हैं, लगते जाते हैं। और कुछ लोग हैं तो एयर बैग भी लग जाते हैं। इफ यू नो एनीवेज, तो बस जब एक बार लगना शुरू हो गए तो फिर आप वहां से वापसी नहीं आ रही कभी भी। बट द फैक्ट दैट इस फिल्म की फील्ड में, जो कि हमारी बड़ी बिलवड है, और हम यहाँ पर आए थे बिकॉज ऑफ आवर लव फॉर कैमरा एंड सिनेमैटिक्स एंड एवरीथिंग, लेकिन तुम्हारे सामने ये कि हम उस तरह का वर्क अब प्रोड्यूस नहीं कर पाए जितना हम सोच के आए थे। कि जब एक हमें वो एक एनवायरनमेंट मिलेगा, क्योंकि इट्स नॉट यूजुअली एक्सेप्टेड थ्रू आउट आवर सोसाइटी, और हमें एक वो माहौल चाहिए होता है जहाँ पे हम उसमें थ्राइव कर सकें। तो इसके कोई रीजंस, कोई पर्टिकुलर रीजन इफ यू? हाँ, रीजन तो बहुत सारे हैं। लेकिन मैं जिस पर अभी लाइट डालूंगा, लाइट लाइट की जस्टिफिकेशन डालूंगा, सही है। एनीवेज, तो रीजन ये है कि देखो, स्टार्टिंग में देखो, ये जो है ना, जो हमारी फील्ड है फिल्म, यहाँ पर आप एज एन इंडिविजुअल काम नहीं कर सकते। यहाँ पर आपके साथ टीम होनी चाहिए। तो अगर आपके पास कोई टीम वर्क नहीं है, बारिश हो रही है वैसे, अगर आपके पास जो है ना कोई टीम वर्क नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल, एक अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता। either he would be on the light or the sound or the DOP and whatever. There are many things कि आप मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते। तो एक तो ये चीज़ हो गई कि आपकी अगर टीम अच्छी नहीं है तो आपको मज़ा नहीं आएगा, आप नहीं कर सकते। सेकेंड जो चीज़ है वो ये है कि आगे इंस्ट्रक्टर कौन है। तो इंस्ट्रक्टर्स की भी बात, इंस्ट्रक्टर तो खैर अच्छे ही होते हैं। दैट आई स्टॉप यू देयर, क्योंकि कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी एंड वी डोंट एक्चुअली वांट टू डू दैट। Oh really? Yeah. Oh, you can do it better. Okay, away from all the studies, films, we love them, we hate Obviously, them. Not every film is to our liking. Maybe it's someone's other liking कि हम उसे पसंद नहीं करते, but someone else does जैसे like कि it. मैं एक आपके सामने एक एग्जांपल रखना चाहूंगा। शॉशैंक रिडेम्पशन सबको पसंद नहीं आती, जी, लेकिन कुछ लोगों को बहुत पसंद आती है। बिल्कुल। राइट। तो आपका सवाल क्या था, आप कुछ पूछ रहे थे। तो बस मैं यही पूछ रहा था कि किस टाइप का जॉनर आपको पसंद है, और अगर उस जॉनरा को हम डायरेक्टर वाइज स्पेसिफिक करें तो किस डायरेक्टर को आप चूज ओके, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मुझे अगर आप हॉलीवुड की बात करें, हॉलीवुड में आई लव क्राइम, दैट्स वेरी गुड। और उसमें वो जो है टेरेंटिनो, he is like, damn, he is very good at showing blood and all things. I love the art of like showing all the things. तो मुझे वो पसंद है। बाकी अगर आप यहाँ की बात करें, यहाँ तो हम लोग आ रहे हैं ना अभी। आई थिंक आई होल्ड यू टू इट कि टेरेंटिनो की जो है ना, हम्म। him showing the most uncensored violence and या all एग्जैक्टली। that blood. Um, if you have seen, I remember his name. It's a great movie. I think it has Samuel Jackson.
everything, and it's about a movie of about 5 to 7 characters जो कि एक बड़े ही एक छोटे से शेल्टर के अंदर हैं और उसके अंदर पूरी मूवी तकरीबन उसी के अंदर पेश की गई है, बट द वायलेंस इन दैट एब्सोल्युटली, and people might call me a sick bastard, but I love violence, at least in films. भाई देखो, सबसे पहले तो मैं एक बात ये बोलना चाहूँगा कि ये हर जगह होता है, इवन के हमारे ख़ानदान में भी हर जगह, कि जो होती है फिल्म वो एक स्टोरी है, सही है, उसको आप अपने ऊपर नहीं लो। मैंने बहुत सारी ऐसी वो देखी है फिल्म जो कि मतलब हमारे खिलाफ है, हमारे कौन, मुसलमानों के खिलाफ है, मैं कुछ और नहीं बोलूँगा। Anyways, तो वो जैसे स्टोरी है, आप उसको एज ए स्टोरी देखो। हम लोग क्या करते हैं कि नहीं, हम लोग इसमें तो ये बोल दिया या फिर ये हो गया, तो इसी तरह वॉयलेंस जो है वो हम क्या दिखा रहे हैं उसमें, वो एक स्टोरी में दिखा रहे हैं, तो लोग उसको जो है ना बहुत अजीब ले जाते हैं कि यार ये क्या दिखा रहे हो। But लोग don't you think sometimes stories, like for example, um, there's a movie called Schindler's List, and myself included, a lot of people think that it's like a propaganda movie. वो तो है ना, अब देखो कुछ But a चीजें lot ऐसी of होती these हैं। stories do promote propaganda. So I think श्योर what they are saying in the movie actually means something. Not एग्जैक्टली। for everyone, but to some people. हमारे एक टीचर हैं बहुत अच्छे, वो पूछते हैं स्टोरी में जब आप लिखो या फिर जब आप दो उनको बना के कुछ भी, Full disclaimer, he's a great teacher. फुल डिस्क या कि आप जो है कहने के जाते हो, तो दिस इज द मेन थिंग, एवरी स्टोरी उसमें होता ही है। आप क्या कहना चाहते हो ये डिसाइड इसलिए करता है क्योंकि देखो एक चीज होती है कि आप जो ना फिल्म देख रहे हो, सही है, लेकिन उससे कुछ हासिल भी तो वो ये चीज़ है ना। अब देखो जाहिर सी बात है, इसमें कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी चली जाती हैं और ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत ही बिल्कुल ऑफ हो जाती है, इफ यू नो यू। Achha, what do you think is cinema for you? Is a film for you? सॉरी। What does, because a lot of people shoot videos, हम्म। and if I go ahead and shoot a video that is an hour long, that does not give it the label of film. So what makes these videos a film to you? वेल दिस इज अ वेरी ग्रेट क्वेश्चन। फिल्म और एक आम जो आपकी होती है वीडियो, उसमें क्या फ़र्क है मैं आपको बताता हूँ। वीडियो एक है कि बस आपने निकाला कैमरा, आपने बस स्टार्ट कर दिया। फिल्म जो है ना वो बेसिकली स्टोरी को लेकर होती है। आप उसमें स्टोरी दिखाते हो कि यार ये यहाँ से एक वो था बंदा, एक वो यहाँ से यहाँ तक आया, उसकी स्टोरी क्या है, वो आया किस तरह, उसको जो है कितना टाइम लगा, उसने कितने स्टेप्स लिए, या फिर जो भी है उसकी स्ट्रगल हो गई, उसका जो वो है रिजल्ट, वो आ भी सका है फिर नहीं आ सका, वो फिल्म। So I think the video is more about showing a story, but film is about telling a story. Yeah, Yeah. we have to do storytelling. That's what we do in a film. What about cinematography? We have, Roger Deakins. of course. Have you seen Dune? Have you seen Blade Runner? Yeah. I have seen Roger Deakins. Have you seen the war movie? Which one? क्या बोल 1917? Yeah. Yeah, it's stunning. And if you're talking about war movies, I'm sure you've watched Dunkirk about Christopher Nolan. I have seen that half. As always. देख लूँगा But even in Dunkirk, Nolan himself, the great, he plays with time itself. देखो नोलन जो है ना वो अलग है, उसके लिए हम बात करेंगे कभी अलग से। नोलन मेरे ख्याल से वो आधा घंटा 15 मिनट 1 घंटे में कभी वो डिस्कस नहीं हो सकता। जो एक बड़ा क्लीशे सवाल मैं पूछूंगा, which is, I mean, I know about him, but who is Qumber? आपने गलत सवाल किया, आपको पूछ रही है कहानी वाला लड़का कौन है। वेल फॉर मी, कर मैं तो हुई, लेकिन कंबर हसन जाफरी अगर किसी को जानना है तो
एक एक वर्ड में आपको बताऊं, स्टोरी टेलर. And you mentioned कहानी वाला लड़का, कहानी वाला. What's the difference you think between them, between Qumber and that कहानी वाला लड़का? Okay, so Mr. Sayyid Qumber Punjabi is a very introvert person. Yeah. ये मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, कुछ लोग नहीं मानेंगे इस बात को, लेकिन it is what it is. Yeah. He himself is very innocent and introvert. कहानी वाला लड़का badass. He's like badass. और he wanna be a gangster, but he would never be. He's a I know. pussy. Yeah. अबे जान, मतलब ये क्या राय वाला कर दिया तूने यार? Well, अगर मैं ये सवाल पूछूं तुमसे कि मुस्तफा अली शेख, राइट? मुस्तफा अली शेख कौन है ये? Yeah, the story goes way deeper than anyone really knows. Yeah. I would say that जब होश संभाला तो वो तब था जब अब्बा का इंतकाल हुआ. And then after that, I don't know, it just seemed like that everything is going. It's not feeling anything. It's just going and going. And about like 2-3 years ago, when I started ACCA, which is a very different field from this, I don't know why you started. and then I came here. It's a very different field for me. But the thing is कि जब मैंने कॉमर्स वगैरह में किया था तो ACCA made more sense than this. So जब मैंने वो स्टार्ट किया तो that's when like मैं वापस अपना आप वो संभाला कि यार what am I doing with my life. अगर एक वर्ड में डिफाइन करें तो मुस्तफा अली is a nice person. Oh, nice thing, yes. Why so nice? I don't know. Maybe I've seen too much evil, and I think that being one less asshole would mean something. You know? Yeah, it will definitely. Evil, क्या देखा है? यार अगर evil की बात करें ना तो starting में तो खानदान में देखा. Relatable. Yeah, my paternal family was. I mean, they are close with me, but the things they do, the things they say, behind closed curtain, behind closed doors, and दबे अल्फाजों में जो चीजें कह जाते थे, these things really hurt. Yeah, exactly. ये तो खैर खानदान का, ये तो मेरे ख्याल से आई एम श्योर बल्कि कि ये हर जगह ही हर किसी का है. What if I talk about कराची? कराची में तुमने इविल क्या देखा? कराची के तो हर लौंडे ने बस फिर एक इविल तो देखा ही है कि अरे टीआरपी बढ़ेगी, बताओ ना. They have seen guns, they have seen violence. Even my father was in a controversial party. Oh, yeah. I mean, it's pretty obvious. Okay, bhai. Yeah. So I saw these things up close. I saw these things very closely. I saw the reasons behind them, the good reasons, the bad reasons, the actual stories that I saw. Because people did not tell me these stories. I lived through these stories. And even my father he was a great man. He was Indeed. a wonderful man. He died at a very young age, which was unfortunate for him and for us. But the thing is that even after going so early, I don't think I ever felt absence of him. I think he's always there for me. And बिल्कुल ऐसा ही है. So in every moment of evil, I think I have him. So I think that's how I overcome these things. But evil की तो एक killings हो गई, डकैतियाँ हो गई. तो मैं इसी बात पे आ रहा था कि अगर आप कुछ बताएं, शेयर करें इस बारे में, आपने कुछ देखा हो लाइव या कुछ. यार अगर मैं सबसे ज़्यादा जो मुझे सही से याद है किस्सा वो ये कि हम जो है वो अपनी खाला फूफो के घर थे और
वो काफ़ी बुरा दौर था एक तरह से। तो एट द टाइम अगर मैं कहूँ तो some people from Liari, they used to come to our neighborhoods and then they would fight. So one day we were just in a balcony. तो हमने जो है वो balcony से पीछे देखा, so there were three guys with three Kalashnikovs and they were just spraying. They were just spraying in anybody, even if it's a fucking child, it's an old man, it's a lady, it's a man, it's a young teenager who has a lot of dreams. They still move them. So I think that's the most horrible moment I have. But yeah, I think that's the most horrible thing. And it was on the time of, like, at what year? I think it was like 2010 or 2011. Yeah, same. What do you think about yours? I'm sure you have some. Obviously, What's your, man. being a Karachi kid, it's. I have grown up in an area जहाँ पे बस फुल ऑन सीन। तो मैं बताता हूँ, एक 2012 नहीं 2011, 8 साल का था मैं। जगह का नाम नहीं लेते। मैं एक जगह खेलने आता था विद माय 7 और 8 दोस्त। तो एक दिन हम लोग खेलने का शाम शाम का कोई 5 बजे। तो 5 बजे हमने स्टार्ट किया खेलना। 10 मिनट बाद दो दो बंदे आते हैं बाइक पे, सही है, उनके हाथ में राइफल, और उन्होंने क्या स्प्रे शुरू किया है। मैंने 12 लोगों की लाशें वहीं पड़ी हुई देखी। This is the first time I am like saying on this thing on a camera, और वो चीज़ आज तक जो ना मुझे हॉन्ट करती है। Like I was 8 years old and I just saw these things. I was like very very bad. और उसमें मेरा एक दोस्त भी। Damn. Oh, I don't know. still I hurts. think the people that did this, they never valued a life. They cannot, man. They are stone-hearted. Or just leave this topic. अच्छा, अगर हम लाइफ के टॉपिक पे ही हैं तो what do you think that life means and what's the purpose of it? अगर हम क्योंकि हम usually जो है वो एक we are bounded by religion and the things that we have been told, उसको believe करते हैं बिल्कुल, but what if we exclude the religious factor? What do you think that would actually mean what our lives would be without just serving our God? तुम्हारे सवाल से मुझे पहले तो कोई एथियस्ट याद आ गया। खैर वो वाला कॉन्टेक्स्ट है। एनीवेज लाइफ, वैसे आई मे बी टू यंग टू आंसर दिस बिकॉज आई एम जस्ट 20 साल का। एनीवेज लाइफ, एक वो थी पोम अबू बिन आदम, 9 में पढ़ी थी। तो उसमें क्या होता है, गॉड लव दोज हु लव देयर फेलो मैन, आई गेस ये। तो उसमें क्या है कि भाई बस आपको लाइफ आप जो ना दूसरों के लिए जियो, लाइक अपने लिए भी जियो, एंजॉय करो, लेकिन आपको हेल्प करनी चाहिए। आपको लाइक यू हैव टू लिव विद अदर्स। अगर आप अकेले जाओगे तो इट डजंट मीन एनीथिंग यार। अगर मैं एक दोस्त कहते वो मैं एक बात कहता हूँ सर जो मेरे वो हैं दोस्त, उनसे कि यार अगर मैं अकेला वहां चला गया जन्नत में, सही है, तो मुझे मजा ही नहीं आएगा। अबे तुम लोग तो जहन्नुम में बता गए, अबे तुम लोग तो आओ। अब मैं तुम लोग को वेट कर रहा हूँ कि अभी अभी देखो मुस्तफा साहब आएंगे, मुस्तफा साहब तो अभी मुस्तफा साहब आएंगे, फिर कुछ स्टार्ट करें, देखो कुछ भी हो जाए। ठीक है, मजाक मस्ती कर लेंगे बिल्कुल। तो बस यही है यार लाइफ का, कि बस जियो, एंजॉय करो, चिल करो, लेकिन जो साथ में है उनको साथ रखो, क्योंकि भाई देखो साथ देने वाले तो ना बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो दिस इज व्हाट आई थिंक। तुम बता दो अपने बारे में। What I believe that I think life is pretty much just being happy. Because अगर हम इस्लाम को हटा दें from the world, Yeah. there is no correct side to it. Because in every religion, every way of life, there's some sort of things that we don't agree with.
तो ये तो हमारा वो है ना पर्सपेक्शन, लेकिन जब कोई दूसरा इसमें जो बट इवन देखो ना, अगर तुम ये बात करो कि देयर इज नॉट, आई डोंट थिंक देयर इज वन सिंगल थिंग दैट एवरी रिलीजन एग्रीज। लाइक I don't think that there were people, a lot of people agree that humans should not die for anything, okay? Except they have committed some crime or something like that, they should be punished. But there are religions that sacrifice humans for gods. For yeah, there like see, there so are. they are just dying for no reasons whatsoever, except of course they're what they believe. So I think the life just means that be happy and make others happy. Because for me, making others happy makes me happy. हाँ, Which is a very sad thing because my happiness is relying on others. So if they are sad, then I'm sad. I know where you're going. Shut the fuck up. Right? I think it's very fun. Okay, I think it's just having fun, being With? happy, having fun with friends. Like friend with fun. Yeah, friends with fun. Right. I think that's it for today. Literally. Thank you so much for coming, and it was a wonderful time. We talked अभी about तो मैं expose करना था यार. Yeah, I think that's all the time we have right now. चलो फिर मिलते हैं.